जय जोहार, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग आदिवासी में। आज मैं फिर से एगो 3 मन एगो शानदार वीडियो लेके आऊँ। आज एशियन महापुरुष कर जीवन कर सफलता इतिहास अचीवमेंट की चर्चा करो। ये महापुरुष कर नाम कि जयपाल सिंह मुंडा जी के प्यार से मोरंग गुम के भी कहे ना। ये महापुरुष के मैक्सिमम आदिवासी भाई बहन मने नहीं जाने ना। सबसे पहले कहे चाहूँ कि आज जे भारत संविधान में हम इनके अलग से जे आरक्षण मिले, जे अधिकार मिले, केकर बदौलत मिले, यह महापुरुष कर बदौलत मिले। हम इनके आरक्षण दिलाए के लिए, अधिकार दिलाए के लिए एड़ी चुटुकर जोड़ लगाए दिलक ये महान पुरुष। जयपाल सिंह मुंडा एगो हॉकी खिलाड़ी, राजनेता, पत्रकार और संपादक रहलक। जयपाल सिंह मुंडा कर जन्म 3 जनवरी 1903 झारखंड में होलक। अपन पढ़ाई लिखाई सेंट पॉल स्कूल रांची से करलक। फिर अपन हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में गेलक और अपन स्टडी पूरा करलक। जयपाल सिंह मुंडा में बचपन से ही एगो मास लीडर, दमदार राजनेता कर क्षमता रहलक। 1928 में जब समर ओलंपिक का आयोजन करलन नीदरलैंड में, भारत भी समर ओलंपिक में भाग लेलक। ई टीम कर अगुवाई करलक जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा कर अगुवाई में लीग मैच में 16 में जीतवलक और 1 में ड्रॉ करवलक। समर ओलंपिक में भारत गोल्ड मेडल जीतलक और सारा क्रेडिट जयपाल सिंह मुंडा के दिलन। भारत के फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलवाए कला जयपाल सिंह मुंडा ही रहलक। जहाँ भारत कर संविधान बनत रहलक से टाइम आदिवासी मन कर बारे में कोई नहीं सोचलन। से टाइम जयपाल सिंह मुंडा पूरा आदिवासी समुदाय के संविधान सभा में रिप्रेजेंट करलक। आदिवासी मन ले आरक्षण और अधिकार कर मांग करलक। तीन मन ले एगो छोटे से क्लिप सुनाई चाहूँ ना जयपाल सिंह मुंडा कर स्पीच। Come here to say a few words on behalf of all the Adivasis of India. Our standpoint is that there seems to be tremendous disparity amongst our social, economic, and educational standards, especially when it comes to the Adivasis and the rest of the people living in this country. And I am of the firm belief that unless we introduce some kind of statutory compulsions and implement them, it's going to be very difficult for us Adivasis to come up to the general population level. See, the Adivasis also want to be treated exactly the same way as the rest of the people are treated in this country, which was not the case up until now. In the past, we have been isolated, marginalized, and kept away from the mainstream as though we were some species that belonged in a zoo. See, the whole point is that you've got to mix with us, and we are willing to mix with you. And that is precisely why we have insisted on the reservation of seat. Very important. Very important. You see, I being an Adivasi can vouch for the fact that this one thing either gives me a new life or finishes me off completely. We must make it definite that the lands of the Adivasis are protected. And I want it to be definitely, most certainly mentioned in the Constitution. Very well. In pursuance of what Sri Jayapal Singh has just said, we might add, after public interest, including the protection of minority groups and tribes. Why not? This matter of the Arms Act has been mischievously applied against the Adivasis. Let me give you the instance of the Orans. They are the 4th largest group of Adivasis in India. Just about now, there is a festival in which these Orans get together, walk in a procession, carrying arms and weapons like lathis, bows and arrows, and they go to various akhadas in the villages. Now, this has been going on for centuries. Last year, all of a sudden, we were told that we should not carry any arms and weapons. Now, I don't mind pointing out, there are several members sitting here who are from Bihar. They won't be able to get back to their homes if they're not escorted by these people with arms. Every 7 years, it is the custom in Chota Nagpur, during festivals like Era Sandra and Jani Shikhar, Adivasi women get together, dress as men, and hunt in the jungles. Now, this is the only occasion that allows these women to show their masculine prowess naturally. So they love to dress as their men do. They love to carry arms and weapons like their men do. Arms like lathis, bows and arrows, bhalas, and so forth. But according to this particular article in the Constitution, my fear is that upon seeing these women walking into the jungles
with arms in their hands, the government might interpret that they were getting together for some kind of dangerous purpose. And I propose to accept his amendment. So the matter may be postponed until then. I submit that by the back door, there seems to be a collective attempt here to interfere with the religious rights of the most ancient people of this country, the Adivasis. I remember during our discussions in the advisory committee, Maulana Azad was pleased to put a direct question to me. And his question was, क्या ये मजहबी चीज है? Is this a religious matter? Now, sir, as far as the Adivasis are concerned, there's absolutely no religious ceremony, no religious festival that can be performed or celebrated without the use of rice beer. So pardon my saying so, but this amendment seems to be a vicious one. It seeks to interfere with my religious rights. So whether you put it in the constitution or not, I'm not prepared to give up my religious privileges. Mr. President, so I feel that I would not be discharging my duties properly if I didn't plead to the House that in Schedule 7A, some of the Adivasi languages, which are spoken not just by a few, but literally by millions, should also be included. These languages are Mundari, Gondi, and Orao. Sir, all I plead to this House is simply this, that the languages spoken by the most ancient people living in this country should find a place of honor in the schedule. नहीं तुम मन की सुनै चेत रहलो ई महापुरुष के बहुत ही कम आदिवासी भाई बहन मने जानेला काले की इकर नाम इतिहासकार पलना में किताब में बहुत ही कम है और यूट्यूब में भी वीडियो ज़्यादा नाके जयपाल सिंह मुंडा कर नाम से रांची में स्टेडियम आए नेशन आए सब आए और बहुत कुछ बना है लास्ट में इतना ही कहना कि जयपाल सिंह मुंडा कर बारे में आस पड़ोस भाई बहन दीदी बहन सबको ये बतावा काल की जयपाल सिंह मुंडा ऐसे आदमी रहलक जे छोटे से गांव में पैदा हुई के छोटा सा परिवार में पैदा हुई के इंग्लैंड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़लक अपन शिक्षा पूरा करलक और ICS इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट होलक जिके आज हमें IAS कही ना जिके भाई बहन मने सुन के इंस्पायर बन और आगे जाके आदिवासी मनकर नाम रोशन कर बन ये वीडियो के जितना भी दिखला सबके धन्यवाद जय जोहार।